morning, students. How are you? I hope all you are fine. I'm Gunjan from the Wisdom School, Sirsa. So today we are going to start our next topic about the germination of seed. Germination of seed. In our previous lecture, we study about the structure of the seed. Okay, the outer layer which protect the seed is known as seed coat. Already you know. Okay, inside the seed there are leaves which are known as seed leaves, are also known as cotyledons. Okay, Rajesh? Now the question is, what is inside the seed leaves? Inside the seed leaves there is a baby plant, okay, which grow. There is a baby plant which is also known as embryo. Seed leaves provide the proper food for the growth of this embryo. Okay, baby plant, when the seed coat becomes very soft, then the baby plants come out. Okay, Razi? So this already we have done about the seed coat and about the cotyledons in our previous lecture. Okay. So today we discuss about embryo. What is embryo? Inside the seed leaves a new baby plant developing, which is known as embryo. Okay, Razi? Now our next topic is germination of seed. देखो राजे, जितने भी सभी सीड्स हैं क्या वो प्रॉपर ग्रो करते हैं? सभी ग्रो करते हैं? नो, सम सीड्स ग्रो इन प्रॉपर conditions, favorable conditions. So what are proper conditions, favorable conditions for the growth of a seed? First one is soil. For the growth of a seed, first requirement is soil. The soil should be full of the nutrients. So what are nutrients? You know, nutrients are the substances that help in the growth of the seed. Okay, कि जो सोयल के अंदर जितने भी राजे न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? सीड की नरिशमेंट के लिए क्या है? रिक्वायर है. ओके राजे, सो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? सोयल शुड बी बेस्ट क्वालिटी. ओके, बेस्ट ऑफ द क्वालिटी. सेकेंड वन इज एयर. Like we need air for which purpose? To breathe. Okay, similarly for the breathing of the seeds, air should be there. Without air, in the absence of the air, the seed will not be grow. Okay, Razi? So second favorable conditions for the proper growth of a seed is air. Okay, third one is water. If there is in the presence of water, seed coat become very soft. We know seed coat, this one outer layer. If there is water present, moisture present, then seed coat becomes very soft. As seed coat becomes soft, the embryo, baby plant strike out and come out. Okay, easily come out. So third condition is Razi, water. For the growth
of a seed, water should be necessary. Fourth one condition is Raze, warmth. Okay, warmth should also be there for the activation of seed. Seed becomes active in the presence of warmth. जितनी वार्मथ होगी वहां पे राजे, थोड़ी सी गर्मी होगी, तो वो क्या होगा, जो सीड होगा इजिली क्या करेगा राजे, ग्रो करेगा. ओके, सो फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन मीन्स, नाउ टेल मी what is the meaning of germination? Germination means it is a process, name of the process in which the favorable conditions should be there for the proper growth of a seed. Okay राजे, कि जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें अगर ये नेसेसरी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, हमें अगर नेसेसरी कंडीशंस ये होंगी, तभी क्या होगा राजे, कोई भी प्लांट है, कोई भी बेबी प्लांट है, एम्बेरियो है, वो क्या होगा, अच्छे से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा. ठीक है. नाउ अनदर स्टेज, another thing is stage of germination. See this diagram. Suppose this is a seed. Okay, the ये जो पार्ट है, the part of the seed which grow downward, नीचे की तरफ जो ग्रो कर रहा है, इस तरह, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल. क्या बोलते हैं राजे, रेडिकल. कि जो सीड का जो पार्ट है राजे, जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडिकल. अगर कोई भी पार्ट सीड का ऊपर की तरफ ग्रो करता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लूमेट. ओके, नाउ सीड का पार्ट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, रूट्स फॉर्म हो रही हैं, तो उसे क्या बोलते हो आप, रेडिकल. ओके, नाउ ये सीड का पार्ट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है राजे, क्या फॉर्म कर रहा है, रूट फॉर्म कर रहा है. ओके, लाइक दिस, ये रूट फॉर्म होगी राजे. ये जो है राजे क्या है, हमारी सीड लीव्स. ओके, जैसे जैसे नीचे का पार्ट ग्रो करता है राजे, तो ये जो सीड लीव्स क्या हो जाती है राजे, फॉलो, नीचे की तरफ डाउन हो जाती है. ओके, और इसके थ्रू राजे न्यू बेबी प्लांट डेवलप होता है, न्यू लीव्स आती हैं. ओके, इस तरह न्यू बेबी प्लांट फॉर्म हुआ, न्यू लीव्स फॉर्म हुई. ओके, तो ये जो न्यू एम्बेरियो है राजे, बेबी प्लांट है जो, इसका जो अपर पोर्शन है, उसे आप क्या बोलते हो राजे, एपिकोटिल. क्या बोलते हो, एपिकोटिल. ओके, और जो ये एम्बेरियो का नीचे का पोर्शन है राजे, द पोर्शन डाउनवर्ड ऑफ द एम्बेरियो is known as hypophyte. It is known as hypophyte. Okay, so see again in this diagram. First of all, we take a seed. Suppose we take bean seed. Okay, in this, the portion that grow downwards and forms the root is known as radicle. ओके राजे, ये ग्रो हो रही है राजे, जैसे जैसे ग्रो होगी तो न्यू बेबी प्लांट कम्स एंड कोटिलेडन्स फॉलो. बेबी प्लांट कम्स एंड अपर द पोर्शन ऑफ बेबी प्लांट एम्बेरियो इज नोन एज एपिकोटिल, एंड डाउनवर्ड पोर्शन, ये नीचे डाउन की तरफ है राजे, डाउनवर्ड पोर्शन इज नोन एज हाइपोकोटिल. ओके, through this process baby plant comes, new leaves comes. Okay, so process of germination is completed. Okay Razi, so today we discussed about the germination, what is germination, and the stage
stage of germination, how germination happens. We take one example like bean seed. Okay, Razi? See in your book, germination of seed, and here the example. Okay, first example, bean seeds. Okay, how this process stage of germination completed. Okay, I hope you got it. Thank you, students.